Hello students. In today's lecture, we are going to study about carboxylic acids. We will start by studying the nomenclature, then going on to studying isomerism, and हम पूरा all the methods of preparation starting from basics जो NCERT में है to all the way to all the methods of preparation which are required till JEE Advanced. Let's start with the basics first. What exactly is carboxylic acid? Now, as the name suggests, नाम में ही लिखा है, it is a mixture of carbonyl and hydroxyl. So, carboxylic acid, which is represented as COOH, is made up of one part carbonyl and one part hydroxyl. Carbonyl का carbo and hydroxyl का XYL, which makes it carboxylic acids. Now, you can further classify them as aliphatic carboxylic acid depending upon whether the alkyl group attached or if it is an aryl group. अगर कोई ring attached है तो हम उसे बोलेंगे aromatic carboxylic acid. Now let's start with the nomenclature. Monocarboxylic acid के nomenclature से हम start करते हैं. When I say monocarboxylic acid, इसका मतलब है when there is only one COOH attached. चलो, now let's start. In place of R carboxylic acids में हम start कर सकते हैं not only from an alkyl group but हम hydrogen से start कर सकते हैं. Nomenclature is very easy. All you have to do is count the number of carbons. आपको उसका root लिखना है and replace the E in the alkane by the word OIC. उसे हम बोलते हैं alkanoic acid. For example, one carbon methanoic, two carbon ethanoic, propanoic मैंने लिखा नहीं है but butanoic, pentanoic and hexanoic acid. Now, along with the IUPAC nomenclature of these carboxylic acids, what is really important for monocarboxylic acid is to know where their common name comes from and what the common name is. So, for example, methanoic acid is also called as formic acid. And methanoic, the name formic is derived from ants. So it is actually an acid which is released when ants bite. So it is isolated from red ants. वहां से वो नाम आया formic. Ethanoic acid का common name है acetic acid, which is derived from vinegar. Acetum comes from a Latin name जो यहाँ पे acetic करके use किया गया है. Butanoic acid का common name is butyric acid, which comes from butyrum, B-U-T-Y-R-U-M, butyrum, which we get from rancid butter. Pentanoic acid का common name is valeric acid. It is actually derived from the root of a plant valerian. And last, hexanoic acid का common name is caproic acid. Caproic acid is actually a fatty acid which is derived from goat fat. और भी goat fat के carboxylic acid names हैं, but ये the five common names which I have written, ये आप लोग definitely याद करना. Now, moving on from saturated monocarboxylic acid के कुछ examples, तो कुछ important examples हम कर लेते हैं, which is for unsaturated monocarboxylic acid. Now, the first example of unsaturated monocarboxylic acid हमारे पास है acrylic acid, which is also called as prop-2-enoic acid. Second example है crotonic acid, and the third one is cinnamic acid. आपने ये कुछ नाम very similar aldehydic name पढ़े होंगे in the chapter Aldehydes and Ketones, जहाँ पे आपने cinnamaldehyde पढ़ा होगा and आपने पढ़ा होगा crotonaldehyde, which is butyl-enol, जो ethanol का aldol condensation product है. That is why very important. You should also remember the common names for these unsaturated monocarboxylic acids. Now, from monocarboxylic acids, say students, let's move ahead to
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ना इवन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर आपको याद रखने चाहिए। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज व्हेन यू हैव टू COOH groups present in your carboxylic acid. Let's start with the first one, the most simplest one, COH. इसे हम बोलते हैं oxalic acid. Nomenclature इनका is very easy. यहाँ पे 2 कार्बन है, सो हमने रूट लिख दिया एथ, इथेन, 1 2 नंबरिंग आप देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इफ यू लुक एट द IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये बहुत इजी है। 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन सो प्रोपेन, here they have 4 carbons, 1 plus 2 is 3 plus 1 4, so ये हो जाएगा ब्यूटेन। हाँ, नंबरिंग आपको ध्यान देनी होगी, 1 2 3 4, सो ब्यूटेन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन। आई बिलीव आप इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, आप नीचे कमेंट करना, I will definitely reply to your questions. Now, however, you should remember इनके common names. Common names are very important यहाँ पे. So the first common name हमारे पास है oxalic acid, then we have malonic acid, then we have succinic acid, then we have glutaric acid, then we have adipic acid and familic acid. OMS गैप, ऐसे आप कुछ एक शॉर्टकट निमोनिक बना के जस्ट रिमेंबर दैट द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम कैन बी रिमेंबर्ड लाइक दिस, OMS GAP. Let's continue. Next we move towards the nomenclature of some aromatic acids. So the first aromatic acid that we have over here, इसे हम बोलते हैं benzoic acid. ना आप यहाँ देखें तो ये benzoic acid ऑर्थो पोजिशन पे OH लगा दिया है. This is called as salicylic acid. I'm pretty sure salicylic acid अगर आपको याद है in the chapter phenols के रिएक्शन में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं salicylic acid. Can someone in the comments tell me what is the name of the reaction in phenols in which we produce salicylic acid? Next nomenclature यहाँ पे हमारे पास है, this is, आप इसे बोल सकते हो 2-methyl benzoic acid, या the other name that I want you all to remember, इसे हम बोलते हैं orthotulic acid. यहाँ पे हमारे पास है phthalic acid, यहाँ पे pH silent है and I'm sorry phthalic acid. Next nomenclature जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं isothalic acid. And the last nomenclature जो आप याद रख सकते हैं इसे हम कहते हैं terephthalic acid. So students, these are some aromatic carboxylic acids which are very important that you should remember not only from your board's perspective but ऐसे कुछ आ सकता है when they will mix all this up JEE mains, advanced and even NEET के preparation में. चलो, now एक स्पेशल केस उठाते हैं. Nomenclature में usually when we follow the rule कि the carbon containing functional group should be part of the main chain, but यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास COH 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 है. You cannot have all the 3 COH in the same chain. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, we number it like this. Now यहाँ पे 3 कार्बन है, so इसे हम बोलते हैं propane. And if you see on the first carbon there is COH, second carbon पे COH and third carbon पे COH है, so हम इसे बोलते हैं propane 1,2,3 tricarboxylic acid. And students,
यही प्रोपेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पे स्लाइट अगर हम मॉडिफिकेशन कर दें, दैट इज यहां पे इफ आई अटैच OH ऑन द सेकेंड कार्बन, ऑन द सेकेंड कार्बन पे अगर मैं OH अटैच कर दूं, आई गेट 2 हाइड्रोक्सी propane 1,2,3 tricarboxylic acid. This is citric acid. आपने डेफिनेटली सिट्रिक एसिड के बारे में सुना ही होगा, फाउंड इन लेमन्स एंड लाइम एंड जो भी होता है उसके अंदर, इसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। नाउ एक और इंपॉर्टेंट एसिड का हम नाम लिख लेते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। ये एसिड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो टैमरिंड में मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज टार्टारिक एसिड। एंड टार्टारिक एसिड में आपने थोड़ा नोटिस किया होगा दैट हमारे पास कायरल सेंटर्स हैं। आई रिपीट, आपने यहाँ पे टार्टारिक एसिड में थोड़ा नोटिस किया होगा दैट देयर आर कायरल सेंटर। अ कायरल सेंटर इज जब एक कार्बन के आजू बाजू में 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड। एंड टार्टारिक एसिड के स्टूडेंट्स एनांशोमर भी आप बना सकते हो। जैसे कि ये ले लिया एंड इसका अगर आपने मिरर इमेज बना दिया तो आपको मिलेंगे टार्टारिक एसिड के एनांशोमर्स। नाउ द रीजन स्पेसिफिकली कि टार्टारिक एसिड का नॉमेनक्लेचर क्यों दिया है इज बिकॉज सी स्टूडेंट्स, लुईस पास्चर जिन्हें हम पार्डन मी फादर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं, उन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द सॉल्ट्स ऑफ टार्टारिक एसिड। सो टार्टारिक एसिड carries a lot of significance from that perspective. Okay, so ये था basic introduction on the nomenclature of carboxylic acid. ये सारे nomenclature I hope आपको अच्छे से समझे हैं. Any doubts, any questions, make sure you leave your comments behind. Now, let's continue with the next topic, which is isomerism. Isomerism in carboxylic acid. Now the first type of isomerism in carboxylic acid that we have is called as chain isomerism. तो एक सिंपल से एग्जांपल लेके लेट्स अंडरस्टैंड चेन आइसोमेरिज्म। जैसे हमारे पास यहाँ है ब्यूटेनोइक एसिड, तो हम ब्यूटेनिक एसिड का कोई चेन आइसोमर ऐसे बना सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं दिस इज 2-methyl propanoic acid. So this is the chain isomer. हम यहाँ पे देख सकते हैं this is single chain, straight chain यहाँ पे हो जाती है वो branch. So this is chain isomerism in carboxylic acids. Now carboxylic acid एक और type of, they also show one more type of isomerism जिसे हम कहते हैं functional group isomerism. Now this is very important. JEE Advanced में अच्छे सवाल बन सकते हैं इस पे. Let's look at this functional group isomerism. इसे एक एग्जाम्पल लेके करेंगे. Let's take C2H4O2. C2H4O2 is, my students, it is ethanoic acid. Now when we talk about functional group isomerism, what are functional group isomers? Same molecular formula but different functional group. यहाँ पे देखो H और CH3 को अगर बदल लें, if we move the positions of H and CH3, हमें मिल गया एस्टर. एस्टर का nomenclature लिखते हैं, this is
methyl methanoate. So acids and esters are functional group isomers with each other. Let's write some more functional group isomers. जैसे कि यहाँ पे look at this. हमारे पास अल्कोहल OH भी है, हमारे पास एल्डिहाइड भी है. What we have here is hydroxycarbonyl. And ये specific students, this is hydroxyaldehyde. But हम लिख सकते हैं this is hydroxycarbonyl. So for example, if we take propanone over here, आप ये try करना, आप you try this for propanone. And आप मुझे बताना propanone के which are the two types of hydroxycarbonyl that you get. ये आप मुझे comments में बताना. And हम इसका nomenclature लिखते हैं. This is called as glycoldehyde. इसका नाम है glycoldehyde. And there is one more. यहाँ पे students, if you observe carefully, OH भी है, which is alcohol, and at the same, which is hydroxy, and at the same time, we have a cyclic ether. This is called as hydroxy ethylene oxide. Basically, ये एक cyclic ether है. So I will also write the nomenclature, the common name. इसे हम बोलेंगे hydroxy oxiranes या hydroxy cyclic ethers भी आप बोल सकते हैं. And hence, when we talk about functional group isomerism in carboxylic acids are functional group isomers with first ester, second, first ester, second hydroxycarbonyl. Hydroxycarbonyl could be hydroxyaldehyde ketone, वो आपको देखना पड़ेगा depending upon the molecular formula which is given, and hydroxyoxiranes और hydroxycyclic ethers. जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था. मुझे चाहिए कि you students do this for propanone, and आप मुझे बताना which are the different functional group isomers that you get for propanone. Comment section में. Okay, चलो. Now there is one more type of isomerism जो हमने tartaric acid में already देख लिया था, which was optical isomerism. So आप याद रखते हैं carboxylic acids, if 4 different groups are attached to a particular carbon, तो वो optical isomerism भी they show. Okay, now let's start with preparations. अभी हम start करते हैं preparations of carboxylic acids. यहाँ पे students, we will cover not only all the preparations which are mentioned in the NCERT, but for JEE Advanced, for all the exams, जो बहुत important preparations है in the NCERT and also थोड़ा सा NCERT के बाहर के very important preparations, हम उन्हें सब cover करेंगे यहाँ पे. Let's start with the first method of preparation, and the first method of preparation is by oxidation of alcohols. Now, students, primary alcohols on oxidation, primary alcohols, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं RCH2OH. These primary alcohols on oxidation using strong oxidizing agents. I will give you a list of all the strong oxidizing agents. So primary alcohols on strong oxidation using strong oxidizing agents produce carboxylic acids. अब ये कौन से strong oxidizing agents है? Let's quickly go through all the oxidizing agents or strong oxidizing agents. जैसे आप use कर सकते हैं acidified potassium dichromate, आप use कर सकते हैं
acidified potassium permanganate. तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस कैन बी एसिडिफाइड, या आप ऑल्सो यू कैन ऑल्सो यूज alkaline KMnO4 potassium permanganate, both are okay. You can also use Jones reagent. What is Jones reagent? Jones reagent is chromium oxide and H2SO4, जो कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं H2Cr. So you can also use Jones reagent. All these are strong oxidizing agents, and ये सारे strong oxidizing agents will convert alcohols to carboxylic acids. Actually students, alcohols will first become aldehyde and then वो aldehyde पे रुकते नहीं हैं. Aldehyde से they go ahead with continue till carboxylic acids. आपको अगर specific reactions भी सीखने हैं where alcohols stop at aldehydes, then the list of oxidizing agents is different. वो आपको you will get that in the lecture of aldehydes and ketones. This is the first method by oxidation of primary alcohols. इसे बोल सकते हैं इसमें first subtype. Now, if we oxidize secondary alcohols, so secondary alcohols, students, will first convert into ketones, and वो ketones then further oxidize and give us carboxylic acids. चलो, so हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं इसमें, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes and ketones. So इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes. So aldehydes on oxidation produce carboxylic acid. And students, it is not required कि आप यहाँ पे strong oxidizing agent ही use करो. Here both strong as well as even mild oxidizing agents work. I repeat, you can use both. You can use strong oxidizing agents to perform this oxidation, or you can also use mild oxidizing agents to perform this oxidation. Now let's take एक एग्जाम्पल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे इवन स्टूडेंट्स यू कैन यूज टोलेंस रिएजेंट. आप यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट यूज करो, आप यहाँ पे फेलिंग्स सॉल्यूशन यूज करो. टोलेंस रिएजेंट इज अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट. Then you can use Felling solution. Felling solution is aqueous copper sulfate and sodium potassium tartarate, जिसे हम Rochelle salt भी कहते हैं. You can use along with this ये सारे oxidizing agents भी they will convert aldehyde to carboxylic acids. Now ketone की oxidation के लिए students, when we oxidize or oxidation of ketones, we have to be very careful. Oxidation of ketones थोड़ा सा challenging होता है, and hence we perform oxidation of ketones at a slightly higher temperature. In oxidation of ketones, if we have a symmetrical ketone, for example, अगर हमारे पास है propanol, and if we perform oxidation using a strong oxidizing agent, I repeat, अगर आप ketone की oxidation करते हैं using a strong oxidizing agent, what we get here is carboxylic acid. The carboxylic acid containing one less carbon than the parent ketone. So यहाँ पे, for example, propanone, if you perform oxidation of propanone using strong oxidizing agent, vigorous oxidation, higher temperature पे, we get carboxylic acid.
we get ethanoic acid. And if you observe carefully, propanone 3 carbon, ethanoic acid 2 carbon, so you get a carboxylic acid with 1 carbon lesser. However, for an unsymmetrical ketone, let's say हमारे पास है एक unsymmetrical ketone, एक unsymmetrical ketone का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे I have ethyl as an alkyl group attached to the carbonyl group, and यहाँ पे I have propyl. So the number of alkyl groups are different attached to the carbonyl group. Now in such a case, for an unsymmetrical ketone, if I am performing vigorous oxidation using a strong oxidizing agent, then we follow what is called as the Popov's rule. What exactly is Popov's rule? Is यहाँ पे the carbonyl group will break with the smaller alkyl group. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? The first product that we get is CH3, CH2, COOH, which is propanoic acid. Pardon me, the first acid that I get over here is CH3COOH, ethanoic acid. And the second acid that I get over here is butanoic acid. So this is breaking of unsymmetrical ketones during oxidation following what is called as Popov's rule. So this was, students, the first method of preparation by the oxidation of carboxylic acids. Let's move ahead with the second method. Second method, students, is also oxidation. This is called as by side chain oxidation. By side chain oxidation of alkyl benzenes. Now students, this is also very important. यहाँ पे हम कर रहे हैं complete side chain oxidation of alkyl benzene. आप students, आपने अगर if you have done aldehydes and ketones, in aldehydes and ketones there is partial side chain oxidation of alkyl benzene which comes under Itard's reaction. ये complete side chain oxidation है. So if you have an alkyl benzene, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जाम्पल टोलुइन है, और लेट्स से हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है क्यूमीन. क्यूमीन जिसे हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं. लेट्स से वी हैव क्यूमीन or isopropyl benzene. Now, this side chain on oxidation with alkaline KMnO4. I repeat, ये side chain on oxidation using alkaline KMnO4 gets converted into carboxylic acid. ये हमें बन जाता है benzoic acid. It's a very nice, very simple method, side chain oxidation, but हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है. If the side chain attached has no benzilic hydrogen available, for example students, यहाँ पे if you have tertiary butyl benzene, and I repeat, क्या कहा? No benzilic alpha hydrogen available. What is
नो बेंजाइलिक अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन देखो, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल। उस अल्फा हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स आप स्पेसिफिकली बोल सकते हैं दैट इट इज बेंजाइलिक अल्फा हाइड्रोजन, एंड this will not undergo this particular reaction. So if you try to oxidize this using alkaline KMnO4, no reaction takes place. So this, students, is the second method of preparation by side chain oxidation of alkyl benzene. Now let's move ahead, students, with the third method of preparation, very important method of preparation, using dry ice and the action of Grignard's reagent on dry ice. Now students, what exactly is dry ice? I'm sure आप लोगों ने पढ़ा होगा. Dry ice is solid carbon dioxide. Solid CO2 is dry ice. So Grignard's reagent is RMgX, alkyl magnesium halide. Students, एक और बात आप, there's one more thing students, एक और बात आपने याद रखनी है, that in Grignard's reagent में the alkyl group, students, हमेशा कार्ब अनायन होता है. The alkyl group carries negative charge, कार्ब अनायन होता है, and it's a very good proton extractor. Dry ice is solid carbon dioxide, CO2. Now CO2 का students resonance में हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, one of the resonating forms, and मैंने just कहा था that the alkyl group कार्ब अनायन होता है, so R minus gets attracted towards the carbon यहाँ पे, and Mgx, Mg पे जिस पे positive charge है, will get attracted towards oxygen. So in the presence of pure and dry ether, हमें क्या addition intermediate मिलता है? We have R, alkyl group bonded to C, double bond O, bonded to O minus. O minus के साथ आ जाता है आपका Mgx plus. This is your intermediate. Now this on further hydrolysis, shortcut में करते हैं. On hydrolysis, here is your H, here is your OH, आपको मिल गया आपका carboxylic acid, RCOOH plus Mg, OH and X. So students, this is the third method of preparation of carboxylic acids using dry ice and Grignard's reagent. Chalo. Let's move ahead with the next method of preparation. The next method of preparation is by hydrolysis of amides, pardon me, by hydrolysis of cyanides या amides, हम इसे दोनों कह सकते हैं, because in this method of preparation you start with cyanide, then you first reach amide, and then वहाँ से you go to carboxylic acid. Okay students, now let's understand this method. So amides, पहले हम एक easy way में इसे understand करने की कोशिश करेंगे. We'll try to understand this in the, जिसे हम कहते हैं डब्बा मैकेनिज्म में, then actual mechanism भी समझने की कोशिश करेंगे. So RCN is alkyl cyanide. हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स की हाइड्रोलिसिस in the presence of HCl, हमें एसिड चाहिए. So यहाँ पे H, हाइड्रोजन के लोन पेयर पे, and OH
OH यहाँ पे जाता है, ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर. सो हमारे पास है R C OH डबल बॉन्ड N बॉन्ड H. ये हमें हमारा एक इंटरमीडिएट मिला है, इसे हम बोलते हैं इमीडोल. एंड काफी अनस्टेबल होता है. दिस इज एन अनस्टेबल इमीडोल. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज अ रीअरेंजमेंट, जिसे हम स्टूडेंट्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, टॉटोमेरिज्म कहते हैं. सो व्हाट हैपेंस हियर इज a small rearrangement, that is tautomerism. And in the tautomerism ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट्स टू नाइट्रोजन. हमें मिला R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, that is we get amides. So this is the first part in the preparation where students we went from cyanides to amides. However, reaction यहाँ पे stop नहीं होता है. आपका amide RC double bond O NH2, if we further hydrolyze, I repeat, if we perform further hydrolysis of amides, ये part बाहर आता है. So that is your NH3 and आपको मिल गया आपका carboxylic acid. Students, this is the method of preparation. मुझे चाहिए स्टूडेंट्स आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करना एंड मुझे बताना कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपको प्रिपेयर हुआ है. गिव मी इन द कमेंट्स व्हिच इज द पर्टिकुलर एसिड दैट यू गेट ओवर हियर. However, let's understand this via the actual mechanism of the reaction. This is students, ये आपका cyanide है, H plus from the acid. ये H plus लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के पास जाता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बोरो कर लेता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच नाइट्रोजन पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज. आफ्टर अ व्हाइल ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक्स, ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे जाएंगे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, एंड नाउ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन. एंड ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप होता है लोन पेयर्स ऑक्सीजन के. सो यहाँ पे हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, R C O H H double bond N bond H. Now since oxygen had two lone pairs previously, now it has only one, so it develops a positive charge, and hence nitrogen would want its lone pairs back. एक हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड ब्रेक कर देता है एंड वी हैव R C O H डबल बॉन्ड NH प्लस H प्लस, और ये मिला आपको आपका इमिडोल. इमिडोल के बाद तो स्टूडेंट्स सेम है दैट यहाँ पे रीअरेंजमेंट टॉटोमेरिज्म होता है एंड हमें मिलता है आपका अमाइड. ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्टेड हियर और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया अगेन, बट द रिएक्शन इज नॉट डन बिकॉज हम बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. सो नेक्स्ट स्टेप में अगेन H प्लस विल गो टू द लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो हमें मिलेगा R C double bond O bond NH3 plus, and ये bond अब break होके निकलेगा. So we have
RC डबल बॉन्ड O प्लस, जिसे हम असाइलियम आयन कहते हैं, एंड आपको मिला असाइलियम आयन के साथ NH3. On this acylium ion, water will come. So RC double bond O, OH, OH. Again, oxygen had 2 lone pairs here. ये solvent है, and now it has only 1 lone pair, so it develops a positive charge. Again, this bond breaks. आपको मिल गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कैटलिस्ट फिर आ गया. तो आसान सा मैकेनिज्म है, थोड़ा सा बड़ा है, बट इट इज सिंपल. दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ द रिएक्शन. मैकेनिज्म is not given in the NCERT, but students who are preparing for all India level exams, mechanisms should be known in detail, especially for JEE Mains, JEE Advanced and NEET. डब्बा मैकेनिज्म के आप थ्रू भी याद रख सकते हैं. डेफिनेटली गिव द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो ये था हमारा मेथड नंबर 4 बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोलिसिस टेक्निक ही बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सम मोर एसिड डेरिवेटिव्स. अब करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हलाइड्स या एसिड क्लोराइड्स ले लेते हैं. अब एसिड क्लोराइड्स पीपल आर C डबल बॉन्ड O Cl एसिड क्लोराइड. अगेन हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस. काफी इजी टेक्निक है. H प्लस सिंपल डब्बा मैकेनिज्म में हम कर सकते हैं. यू कैन रिमूव दिस HCl और हमें मिल गया RCOOH. हमें मिल गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड HCl. Now, स्टूडेंट हमने ये किया एसिड हाइड्रोलिसिस, बट आप सेम मेथड कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट एसिड क्लोराइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इवन बाय अल्कलीन हाइड्रोलिसिस. सो अल्कलीन हाइड्रोलिसिस में you will start with your acid chloride and alkaline hydrolysis कर रहे हैं. So I have aqueous NaOH. फर्स्ट स्टेप पे हमें यहाँ पे क्या मिलता है? वी गेट अ सॉल्ट, वी गेट अ सोडियम सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं सोडियम एल्कनोएट. देन स्टूडेंट्स सोडियम एल्कनोएट अगेन इसका आप हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो हमें फिर से मिल जाता है carboxylic acid. So this is the next method of preparation students by hydrolysis of acid chloride. ये सारे acid derivative के hydrolysis students हम कर रहे हैं. Next जैसे कि acid derivative है by hydrolysis of acid anhydride. Now students, acid anhydrides are represented as like this. They are actually derived from carboxylic acids. आप carboxylic acids को dehydrate कर दो तो आपको मिलता है acid anhydride. Acid anhydride को rehydrate कर रहे हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं. So what we get here is carboxylic acid. इसको हम अगेन डब्बा मैकेनिज्म से करते हैं. प्लस H2O. स्टूडेंट्स दिस पार्ट कम्स आउट RCOOH. यहाँ पे भी आपके पास है RCOOH. सो यू हैव 2 units ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड एक और हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं which is by hydrolysis of ester. Same method है people, time बच सकता है.
So ये भी हमने already कर दिया in the chapter alcohols, phenols and ethers, but let's do this. So we have ester, ester की we are performing hydrolysis. So यहाँ पे हमें क्या मिलता है people? We get two products. The first product that we get over here is carboxylic acid, and जो second product मिलता है हमें वो है alcohol. So when you perform hydrolysis of ester, I repeat, हमें मिलता है carboxylic acid and we get alcohol. Now people, acidic medium में ना ये reaction actually reversible होता है. So the reaction is reversible in acidic medium. You can also perform the same reaction in alkaline medium, and in alkaline medium the reaction is irreversible in nature. Okay, so these are the different methods of preparation of carboxylic acid. अब थोड़ा सा हम कुछ और advanced method भी करते हैं. Now let's look at the next method of preparation, students. ठीक है, हम इससे start करते हैं. The next method of preparation that we have is called as Benzilic rearrangement. Okay, now let's understand, students, what is benzilic rearrangement. Now in benzilic rearrangement, what we have is we have a diketone. I repeat, इसे हम कहते हैं 1,2 diketone, or as the name suggests, you can also call this as Benzil. So you have a 1,2 diketone. Now, in the presence of a base, there's a small rearrangement which takes place, and we get something like this. And CHS. This is called as, students, Benzilic acid. But let us understand this via the actual mechanism. Let us understand how the actual mechanism of the reaction takes place. कि reaction mechanism के through होता कैसे है. So we have Benzil. The first step, the base से OH minus, because during resonance these double bond electrons will go here and ये OH gets attracted to the electrophilic carbon that we have here, and हमें कुछ ऐसा मिलता है. Step 1. Okay, students, now comes the main part of the reaction, where यहाँ पे जो नाम आता है V से, where the rearrangement of the reaction takes place. Now
the phenyl group from here shifts to this particular carbon. The electrons from here will shift here, form the double bond, and these double bond electrons, they go on to oxygen. I repeat, let's try and understand this. Understand the rearrangement. The ring goes here. The electrons from here will come here to form the double bond, and these pi electrons, they go on to oxygen. So look at this, C double bond O bond which C O minus, the ring is over here. That is the rearrangement that we are talking about. And हमें कुछ ऐसा मिलता है. And finally, solvent से the O minus will extract a proton and आपको मिल गया आपका Benzilic acid. इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स Benzilic acid. Hence this is called as Benzilic rearrangement. Now this is a very important reaction because rearrangement reactions JEE Advanced में काफ़ी favorite है. Rearrangement reactions एक और जैसे हमने last lecture में किया था students in aldehydes and ketones pinacol rearrangement. So rearrangement reactions are very important. ठीक है. So एक और reaction है that is not, I would say, that important even from a JEE Advanced perspective, but students who are really trying to aim 100+ in JEE Advanced should study. इसे हम कहते हैं Favorskii rearrangement. Now in Favorskii rearrangement, what we have is we have a alpha halo we have an alpha halo ketone which will convert into carboxylic acid. Now look at the alpha halo ketone. Let's take an example to understand this. We have CH3, C double bond O, CH2, and let's say here we have bromine. So propanone pe we have bromine. We can call this as alpha bromo propanone. Okay. Now in the presence of a strong base, let's understand क्या reaction होता है. Now let's try and understand this directly via the mechanism of the reaction. So what happens here is, in the first step, OH minus will extract a proton. So base की तरह काम कर रहा है, it will extract a proton, and bromine from here is your leaving group. So what we get here is a enolate ion. हमें कुछ ऐसे मिलता है. Now look at this rearrangement. So this CH2 has
ये यहाँ पे electrons है, it can be used to form a bond with this carbon, and we get something like this. So in order to simplify this, थोड़ा मैं numbering कर देता हूँ. Number is not for the nomenclature, it is for to really understand how it went from here to here. So ये आपका carbon number 1 था, ये 2 है और ये 3 है. So the first carbon bonds to the third carbon over here. Now next step में what happens is आता है आपका OH minus. The OH minus attacks over here and ये electrons जाते हैं over here. So what we have is again CH2 minus bonded to CH2 and COOH. Again, if I just number this, this was 1, this was 2 and this was 3. I repeat, nomenclature के numbers नहीं, this is for us to really understand. So OH attached to the second carbon, तो यहाँ पे ये था, ये carbon number 2 था, 2 was bonded to ये carbon number 1 और ये था आपका carbon number 3 which is CH2 minus. And then next step में क्या होगा, this CH2 will extract a proton from the solvent and the final product that we get is CH3 CH2 COOH. So in Favorskii rearrangement, alpha haloketones are converted into or rearranged into carboxylic acids. Okay. Chalo. So I hope students, Favorskii rearrangement, especially students with JEE Advanced 9th reaction, Favorskii rearrangement and 10th reaction आपके लिए is very important. चलो, before ending the lecture, एक homework question आप कर लीजिए. If I give you, let's say a जैसे कि टर्मिनल कार्बन, एक एल्केन के टर्मिनल कार्बन पे हमने इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास हैलोजन है. इफ आई परफॉर्म हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर. सो फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, तो मुझे बताना what this produces. Or let's say if I give you benzotrichloride, what product do you get over here? Hint, ये भी हम एक मेथड बोल सकते हैं to prepare carboxylic acids. Okay students, so these were the most important methods for the preparation of carboxylic acids. We started from the basic nomenclature, we went through isomerism, and we went through 9-10 very very important methods which NCERT भी cover करता है, a bit mechanisms जो NCERT में नहीं दिए थे, and few important reactions जो JEE Advanced के लिए भी required है. Now in the second part of the video हम बनाएंगे reactions of carboxylic acid. Not only reactions of monocarboxylic acid, but JEE Advanced students के लिए reaction of even some very important dicarboxylic acid reactions भी हमें करने होंगे, and उसके बाद हम properties करेंगे. So the second part of the lecture, definitely do watch, do subscribe to the channel, and if you have any questions regarding not only carboxylic acid but आपके पास किसी भी chapter का कोई भी doubt हो, please make sure that you put that in comments and JPS Academy will be available to definitely help you. Thank you students.